Hello and Assalamu alaikum. This is Qayyum from Q's Basic Cooking, and we are going to make a very simple yummy recipe with the besan. And besan is the chickpea flour, or garam flour is also called. So I'm just going to make this recipe because this is something I make ahead always, and keep it in a jar, and it also comes handy when we need something, a little snack with the tea. So that's why I'm using 1 cup of besan to make the boondi, and I'm adding half teaspoon of salt, 1/4 teaspoon of baking soda, 1 teaspoon of chaat masala, and a dash of black pepper, and adding the water to it very slowly, because if I add the water more than I need, and I'm going to end up with a very runny besan, then I will have to use more besan to put in the batter to make it thicker. So for boondi, it's very important to have the right consistency. You have to have it, otherwise when it goes down from the spatula or whatever tool you are using, it will be all over the place. It will make a mess. So boondi is made with very few ingredients. I'm going to let that sit now for 20 minutes, and then I'll heat up the oil. Oil has to be heated up on medium to low. It has to be, because if the oil is too hot, it will burn right away. The little teeny tiny little balls we are going to make of boondi, they will burn right away. And make sure the spatula, the karchi, is coated with oil, so the besan will not stick to it, because remember, it's a thick besan. So we're going to add a little bit at a time, just a little bit at a time. It takes a lot of patience, because if you try to shake it too much, you will end up with more like kesmaya than boondi. So you have to let it come down on its own, and you keep adding little bit, 1 spoon at a time, and it has to be on low heat so they don't burn. This way, we will have very crunchy and very well cooked, fried, crispy boondi. This can, once it's done properly, it will stay for as long as you want it to stay. So for the small boondi, I'm using the karchi, the spatula with the holes in it. And if I want to make bigger one, I will use grater, जो कद्दूकश होता है ना, कद्दूकश की जो मोटी वाली साइड होती है, उसके अंदर जो फ्लैट कद्दूकश होता है, जो डब्बे की तरह नहीं होता, फ्लैट होता है, उसके एक साइड पे अगर डालें तो वो मोटे मोटे सुराख से मोटा मोटा बन जाता है. I made this like 2 weeks ago when Ramadan started, and I ran out of it. So I'm going to make for another 2 weeks, and like I said, it's a very handy snack, and it's also very good for the raita. So I will make the chunky ones for snack and the little ones for raita, or you can do either way. See, they are coming out nicely. It takes patience though. सब्र बहुत चाहिए होता है इसमें, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी काम करने की आदत है. तो इस तरह सब्र वाली चीज़ जिस दिन मेरा मूड हो उस दिन मैं बना के रख लेती हूँ. अदरवाइज़ मुझसे नहीं होता खड़े होकर इतना आहिस्ता आहिस्ता करना. सो अगर मेरे पास बड़ी करछी होती तो शायद मैं ज़्यादा और जल्दी बना लेती, लेकिन मेरा चूँकि छोटे वाला है, इसलिए उसके हिसाब से मुझे आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ता है. आप 1-2 ट्राई करके देखें. अगर वो अंदर तक पक चुके हैं, फ्राई और क्रिस्पी हैं, तो वो हो गए हैं गोल्डन ब्राउन होके, दे आर डन. So let's make some of the bigger ones with the, like I said, with the grater on the one with the bigger holes in it, not the fine one. Just pour 1 spoon at a time, 1 spoon at a time, same way. But those little balls are a little chunkier than the little ones. एक बार फिर मैं ये कहूँगी कि जो कंसिस्टेंसी है, कितना गाढ़ा बेसन को करना है, ये प्रैक्टिस से आपको आएगा. आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर उसमें डिफरेंस होगा, थोड़ा सा भी नरम होगा, नरम नहीं, पता नहीं कैसे मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, कि
आप उसको ट्राई करके देखें, आपका हाथ सेट हो जाएगा। जो कहते हैं ना मेरा हाथ सेट हो गया, तो आपका हाथ जब सेट हो जाएगा एक बेसन के ऊपर जो बिल्कुल सही होगी जिसकी कंसिस्टेंसी, बस फिर आपको समझ आ जाएगी कि हमने वैसा ही हर दफ़ा बनाना है। What I was saying again is that two things count. Number one is the consistency of the batter. It has to be not too thick, not too runny, just perfect, so it can come down one drop at a time. And the oil has to be on medium low. That's all to it. There's nothing more. And of course, a lot of patience, but that's about it. Once you're done with it, you have it for a while. Believe me, it's worth the patience. If you are following my channel, you are watching my little videos, thank you very much. And please, if you have not subscribed yet, प्लीज़ गो अहेड एंड डू सो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़, अगर आपको मेरी कुकिंग अच्छी लगती है, मेरे आइडियाज़ और छोटी छोटी वीडियोस जो मैं डालती हूँ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि मैं कैसे कर रही हूँ। उप्स, मेरा हाथ हिल गया। ये देखें कितने अच्छे बन गए हैं और ठंडे हो गए हैं। मैंने उनको जार में डाल दिया। मुझे आज जल्दी है क्योंकि मेरा रोज़ा लेट हो रहा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारा काम कर रही हूँ। इंशाल्लाह अगर कभी टाइम मिला या किसी को चाहिए हुआ तो डिटेल में भी इंशाल्लाह बन जाएगी वीडियो। ये देखिए मैंने अपने लिए एक प्लेट बना ली है बूंदी की। बूंदी रायता बना लिया मैंने अपने लिए। दिस इज़ माई बूंदी रायता एंड आई एम गोइंग टू हैव इट विथ माई इफ्तारी एंड आई एम रेडी फॉर इफ्तारी नाउ। सो बिस्मिल्लाह। Please do try and let me know. Thank you for watching. I appreciate that. If you will leave me any feedback, it will be very much appreciated. So thank you very much for watching. Bye bye.